Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 2 and 3rd of February. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we will be talking about Utkarsh Odisha Make in India conclave that has been inaugurated. Then an MOU has been signed to strengthen India's statistical ecosystem. Next, World Health Organization has declared Niger as the first country in Africa to eliminate a certain kind of disease. We will be discussing about this disease. Then RBI Ombudsman has resolved 95% of the complaint received in FY24. RBI has tightened the norms for imposing penalty under PSS Act of 2007. Our new investment announcement surged by 39% to over 32 lakh crore rupees in 9M FY25. That is right. All these things will be discussed in detail and many more students, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs videos at 5 a.m. in the morning, then weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise they are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We have one-stop solution for current affairs. Also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Let's start with national affairs. Prime Minister Narendra Modi, as you can see it in the picture here, has inaugurated Utkarsh Odisha, that is Make in India, Make in Odisha conclave in Bhubaneswar, Odisha. Now what this is all about, that we have to focus on manufacturing, that how can we grow manufacturing specifically in the state of Odisha, right? Make in Odisha conclave, that is Utkarsh Odisha. Right, first thing, Make in Odisha conclave, and second thing, remember about the Make in India, Make in Odisha exhibition also. Right, both were held in Bhubaneswar, Odisha. Now if we talk about this Utkarsh Odisha, this event was held from 28th to 29th of January and it has brought together various industry leaders, investors, policymakers from over 16 countries that include your Singapore, Malaysia, Australia to explore the opportunities for the investment in Odisha state. Also 145 MOUs were signed during the conclave, attracting an investment worth 16.73 lakh crore rupees across various sectors. Right, then here you will be seeing in various sectors these various MOUs. They include your Jupiter International Limited, then PTC Industries Limited, Adani Group, JSW, Vedanta, right, IIT Sambalpur, Odisha, all they have signed MOUs here. Next is DIID, that is your Data Informatics and Innovation Division under Ministry of Statistics and Program Implementation, and IIT Delhi, IIT Delhi, that is Indraprastha Institute of Technology, Delhi. So these three organizations, they have signed an MOU to strengthen India's statistical ecosystem. See, data, right, when we do various computations or when we analyze this data, right, we come up with various statistics, right, that how that data can be used in various other problems or how we can resolve the data to give a meaningful output. Correct. As the statistical landscape evolves, new methods for addressing the issues such as your data integration, real-time analytics, predictive modeling, all of them are coming into
play. And this data informatics lab, they play a very important role that use your artificial intelligence, machine learning, big data analytics to enhance the data collection, processing, and the dissemination of that data. So here DID, Ministry of Statistics and Program Implementation, signed a memorandum of understanding with IIIT Delhi. Next is World Health Organization has declared Niger as the first country in Africa to eliminate onchocerciasis. Right, this is a disease known as your river blindness, also known as river blindness. Right here, Niger, it became the second time, or this Niger success marks the second time the country has eliminated a neglected tropical disease. And here, WHO has recently declared. Question can also be asked that which organization declared Niger as the first country in Africa to eliminate this river blindness or onchocerciasis, that is a neglected tropical disease. Right, so it is World Health Organization that declared Niger. Right, now if we talk about this oscorosis, right, it is river blindness, or we can say it is a disease caused by parasite. Disease caused by parasites. Next is RBI Ombudsman has resolved 95% of the complaints in FY25. RBI Ombudsman, basically it is an individual or an organization where multiple individuals are there that is resolving the complaints that are received to them. Right, say for example, there was any problem related to banking services, right, a person was not able to get the proper service because of lacking any data or any document, but he is claiming that he submitted it, but he is still not getting, or he is not getting the pension on time. Then he wrote a complaint to the RBI ombudsman where he was seeking that his problem should be resolved, and so is our or are his problem that needs to pay, needs attention. Right, so this RBI ombudsman will look into the matter and will provide the guidance, or it will help us or help that individual customer to resolve that issue. Correct. So RBI, they have recently released their annual report, right, and as per the report, RBI resolved 95%, that is 2.84 lakh complaints received under the RBI ombudsman scheme, that is RBIOS, that is Reserve Bank Integration Ombudsman Scheme, and these 2.84 lakh complaints have been resolved between 1st of April to 1st of April of 2023 to 31st of March of 2024, and this we can say it is at a rate of 95%. Correct, take a note of it. Moving on, the report also informed that the ORBIO has resolved 57.07 of the maintainable complaints through the mutual settlement, conciliations or mediation, while 40% were dismissed due to the absence of any service deficiency. Next is RBI has tightened the norms for imposing the penalties under the PSS Act of 2007. What is this PSS Act of 2007? PSS is your Payment and Settlement System. So RBI has tightened the norms for imposing the monetary penalties, and under the Payment and Settlement Systems Act of 2007, the new norms aim to consolidate and rationalize the enforcement actions by the RBI. The new framework, which has been introduced for the payment operators and banks, outline various contraventions and penalties such as your operation of a payment system without authorization, disclosure of information which is prohibited, and failure to pay the penalty imposed by RBI within the stipulated time period. Also, here RBI has empowered under the section 30 of the PSS Act to impose a penalty not exceeding than 10 lakh rupees or twice the amount involved in such contravention or default where such amount is quantifiable, whichever is more. Also, section 31 of the PSS Act of 2007 has empowered an officer of RBI duly authorized to compound contraventions, excluding those offences punishable with imprisonment only or with the imprisonment and fine. Next, here you can see RBI is empowered under this section to impose penalty not exceeding than 10 lakh rupees. Previously, RBI has empowered to impose a penalty of 5 lakh rupees and now 10 lakh rupees. In case such contravention or default is repeating, one further penalty of maximum of 25,000 rupees every day for
after the first instance during the contravention or default continues can be imposed here on daily basis. So 25,000 on after that on daily basis can be imposed. Next is new investment announcement surged by 39% to over 32 lakh crore, right? 32 lakh crore in the first 9 months of FY25, correct? So according to the data released by SBI's Economic Research Department, they released a report that stated that the new investment announcements in India surged by almost 39% year on year to over 32 lakh crore in the first 9 months of FY25. It highlighted that the investment announcements in India during the last two FYs, that is 23 and 24, have witnessed a significant increase of 37 lakh crore rupees. Correct. Also, the report highlighted that the manufacturing sector saw the maximum announcements of 1,493 projects that are worth 5 lakh 97 crore rupees during the first 9 months of FY25. Right, and this data released by the ERD, that is Economic Research Department of SBI, who is the chairman of SBI CSAT, established on 1st of July 1955, and there is a tagline for State Bank of India, that is the banker to every Indian. Next is KMAMC, that is your Kotak Mahindra Asset Management Company, right? That is the asset manager of Kotak Mutual Fund. They have launched Kotak MSCI India Exchange ETF, that is India's first designed ETF that will track the Morgan Stanley Capital International India Index. Right, so it is Kotak Mahindra Asset Management Company Limited that they have launched it. Apart from this, one more thing, remember, recently it is State Bank of India, right? They have also introduced a new term deposit scheme for the super senior citizens, right? And this scheme is known as SBI Patterns, right? And it is for super senior citizens. Super senior citizens are those individuals that are aged 80 years and above. This scheme is designed to offer additional interest benefits with an interest rate of 0.1% higher than that offered to the senior citizens. Next is NPCI. They have implemented the new rules for UPI transaction ID from 1st of Feb 2025. These rules are important, and according to these rule regulations, that UPI transaction identifications, that are your UPI IDs containing special characters such as @ hash, star, percent and others will be declined and must use only the alphanumeric characters here, right? And this directive aims to enforce compliance with the UPI technical specification implemented back in March 2024. Correct? Take a note of this. Next is economy and business. Garuda Aerospace pledged 100 crore rupees to develop India's first drone city, and this India's first drone city will be where? In Andhra Pradesh, right? In the Kurnool district of Andhra Pradesh, to be specific. Kurnool district of Andhra Pradesh. So which organization? Garuda Aerospace. They pledged how much amount? 100 crore rupees. They will be developing what? They will be developing India's first drone city that will be in the Kurnool district of Andhra Pradesh. So important thing is the first drone city, right? And it will be in Andhra Pradesh. This Garuda Aerospace, this is a Chennai, Tamil Nadu based startup, and it is the leading drone manufacturing company in India. This project will focus on promoting drone innovation, research and development, manufacturing. Also, here this will come under the contribution towards Namo Drone Didi initiative that will empower the rural women through the drone technology. Next is SIDBI and TIDIT SSIA. They have signed an MOU to support the local industries. So SIDBI, they signed this MOU with Tiruchirappalli District Tiny and Small Scale Industries Association that will foster cooperation and support to the local industries. Under this, you will be seeing various support will be provided in capacity building, training, right, skilling. Also, it will support around 450 members in securing business loans at an interest rate approximately 1% lower than offered by other financial institutions. Next is awards and recognition. BCCI Awards 2025 were held, and Jasprit Bumrah and Smriti Mandhana named the best international cricketers for 23-24 in the women's and men's category. Right. So here we are talking about Jasprit Bumrah as the best ICC male player and Smriti Mandhana as the best international cricketer of the year in the women's category.
Correct. Take a note of this. These awards are the BCCI awards, also known as the Naman Awards, right? Apart from them, two important achievements are here. First is of Sachin Tendulkar. He is the 31st recipient of the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award from BCCI. Take a note of this. Sachin Tendulkar, also known as Master Blaster and the God of Cricket. And here, second is BCCI has also presented a special award to the Indian cricketer Ravichandra Ashwin, who retired from all the forms of international cricket in December 2024. Next, here you can see Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award to Sachin Tendulkar. Then Best International Cricketer, that is your Paulie Umberger Award to Jasprit Bumrah. Best International Cricketer Women Smriti Mandhana, right? And Best International Cricketer in Men's category Jasprit Bumrah. Then BCCI Special Award to Ravi Chandran Ashwin. Next is ACC has appointed Rajesh Nirvan as the Director General of BCAS. Now, what is BCAS, students? BCAS is your Bureau of Civil Aviation Security. It comes under the Ministry of Civil Aviation, as you can see in the picture here. Government has appointed IPS Rajneesh Nirvan as the Director General of the Bureau of Civil Aviation Security. He will be succeeding whom? He will be succeeding Amrit Mohan Prasad. He will be succeeding Amrit Mohan Prasad. Next is Science and Technology. ISRO's astronaut Subhanshu Shukla, as you can see in the picture, will pilot the NASA's private Axiom 4 mission, marking first Indian astronaut to travel to International Space Station, right? And there was news that after this mission or during this mission, he will also be performing yoga at the International Space Station, right? And with this, Subhanshu Shukla, right? Group Captain Subhanshu Shukla will become the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. Also, Group Captain Subhanshu Shukla was commissioned into the Indian Air Force on 17th of June 2006. He is a fighter combat leader and a test pilot with approximately 2000 hours of flying experience. He has flown aircraft such as Sukhoi Mark 1, MiG-29, MiG-21, Jaguar, Hawk, Dornier and many other. Then if we talk about this Axiom 4 mission, NASA signed this mission, Axiom 4 mission, that will be going to the International Space Station in USA in 2025. Next is environment. New species of phytopathogenic fungus, that is Epicoco indicum, has been recently discovered. It was discovered where? It was discovered by the scientists of the Banaras Hindu University in UP. Take a note of this, right? That is your Epicocum indicum. This is the name of this phytopathogenic fungus discovered recently by the BHU researchers. Next is important is Indian Coast Guard Day, observed on 1st of February. This day is observed basically to create awareness about the coast sector or the forces, Indian Maritime Armed Forces that are under the Ministry of Finance and looking after are the coast. First Feb 2025, it marks the 49th Racing Day of the Indian Coast Guard. Indian Coast Guard was formed in 1977. Correct? Take a note of it. Moving on, World Interfaith Harmony Week observed from 1st to 7th of February, right? And this is to promote peace, tolerance and promote non-violence among all the faiths. This year, World Interfaith Harmony Week was observed from 1st to 7th of February. There is a theme that I want you all to remember here, that is love of God and the love of neighbor, or love of the good and love of the neighbor. This is the message, inclusive, open to all and entirely voluntary. Right? Take a note of this, students. Next is state news. Inland mangrove Guneri became Gujarat's first biodiversity heritage site. Correct? Take a note of this. So, Gujarat Biodiversity Board, this comes under the Forest and Environment Department of the Government of Gujarat. They have declared inland mangrove Guneri, right? This is in the Guneri village of the Kutch district, right? And it has become the first biodiversity heritage site of Gujarat. Correct? Question will be directly asked that which became the Gujarat's first biodiversity heritage site. It is inland mangrove Guneri, that is in the Kutch district of Gujarat. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next, which countries have recently become the full members of the European Union-led Schengen free travel zone? So recently, Romania and Bulgaria, they have become the member of the European Union and have become a part of the Schengen free travel zone. Next,
In December, NPCI, they have announced an extension of the deadline for implementing 30% market share cap for the UPI providers till 31st of December 2027. This marks the third time that NPCI has extended the deadline for enforcing the market share cap. This market share cap makes sure that the companies they hold at least companies having at least 30 a maximum of 30% market share cap for UPI providers, right, and this was the new guidelines that has been launched by NPCI, but it has been again extended for the next 2 years. The reason for this is that if we look at the PhonePe, right, PhonePe company, they hold 47.8% of the market cap of UPI transaction. Then Google Pay, they hold 37.02%, right. So limiting at 30% will lead to a loss in the revenue for the PhonePe. Next, which organization has appointed Bhavnesh Kumar as the Chief Executive Officer with effect from 2nd January 2025? So, which organization it is? It is UIDAI, that is Unique Identification Authority of India. And here, Bhavnesh Kumar will be replacing Amit Agarwal. Right? Next is who has been recently appointed as the new chairman of Indian REITs Association, that is IRA. Alok Agarwal has recently been appointed as the new chairman of Indian REITs Association. Next is which two countries' space startups have recently collaborated to study using laser-equipped satellites to address orbital debris removal. It is Japan and India. Next, in January, Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of various development projects, including 1,675 flats for the residents of Jhuggi Jhopadi clusters and also the World Trade Center was launched here. So, question asked here is PM Modi laid the foundation stone of Veer Savarkar College where? So, it was in New Delhi. Recently, he was on a visit to New Delhi. During that only, all these things were launched. Next, name the e-auction portal that was recently launched by Ministry of Finance, designed for the e-auction of properties from all the public sector banks. So important, the name of that portal or e-auction portal is BankNet. This portal serves as a one-stop destination for the buyers and investors, making it easier to explore a wide range of the assets. Next, Dr. Raja Gopal Chidambaram, a profound dash, passed away at the age of 88 in Mumbai, Maharashtra. So, Dr. Raja Gopal Chidambaram, he was a very famous nuclear scientist and he played a very important role in the Pokhran nuclear tests of India, right? And he has recently passed away. Next, world's oldest Olympic champion gymnast Agnes Keleti passed away at the age of 103. Which country did she belong to? She belonged to Hungary. Next, which country has recently collaborated with India to develop the Yuga Yugin Bharat National Museum? So it is France, right? India and France has partnered together to develop this museum, that is Yuga Yugin Bharat National Museum. Next, and where this will be? It will be in New Delhi. Next, which of the following are correct with respect to the transformative initiative of ONDC, that is Open Network for Digital Commerce, led by DPIIT, that aims to revolutionize the digital commerce in India? So, which among the following are right here? If we look at the options here, option C is right, A and B are wrong. A is saying that ONDC was incorporated as a non-profit Section 8 company on December 31st with an authorized capital of 1000 crore rupees. Is it correct? No. Right? This was launched when? This was incorporated as a ONDC was incorporated as a non-profit company, correct, with an authorized capital of 1000 crore rupees? No, with an authorized capital of 500 crore rupees. Then B is investors that included National Bank for Agriculture, Rural Development Bank, right, that is NABARD was an investor here, HDFC Bank, Bombay Stock Exchange, SIDBI, ICICI Bank and World Bank. They were the investors here. So is it correct? Are these the investors here? Right, all are there but not the World Bank. World Bank is not the investor here in this ONDC platform. Right, now all the options are rightly mentioned. Next, India and Maldives, they have recently signed a memorandum of understanding for the execution of the third phase of what? So they have signed this MOU for the third phase of the high impact community development projects that will be developed in Mauritius. These projects, they include your healthcare, education, infrastructure, road, right, and technology, many more.
Next is which bank has recently received the approval from RBI to merge with the Cosmos Cooperative Bank Limited of Pune, Maharashtra with effect from 6th of January 2025. So it is which bank? It is National Cooperative Bank Limited. Next, name the new Mars drone unveiled by NASA as a successor to the Ingenuity helicopter for advanced exploration of the planet Mars. The name of that new drone or successor of this Ingenuity helicopter is Mars Chopper. This is the name here. Next, which organization has built the two fast patrol vessels that are Amulya 1272 and Akshay 1273 that are launched by Vandana Agarwal for the Indian Coast Guard? So the name of the organization is Goa Shipyard Limited. Next, which bank has recently approved the raising long-term bonds worth 10,000 crore rupees in a single or multiple tranche during the FY25 to finance the infrastructure and affordable housing projects? It is Bank of Baroda. Next, which company has recently partnered with Bank of Baroda for 5 more years to enhance financial inclusion in the underserved regions of India? It is TCS, Tata Consultancy Service Limited. Next, in January, Union Minister of Steel and Heavy Industries H.D. Kumaraswamy has launched the second round of the PLI scheme for the specialty skill that is termed as PLI scheme 1.1. Question asked is what is the implementation period for this PLI scheme 1.1? So this time this PLI scheme has been launched for 5 products. Earlier, initial phase, it was launched for 3 products and now this PLI scheme has been launched for 5 products. Question asked to you is what is the implementation period for this PLI 1.1? So implementation period is FY26 to FY2030. Next is name the new specialized visa category that was recently introduced by the Ministry of Home Affairs to facilitate foreign students that are pursuing higher education at the Indian academic institutions. So 2 types of visa has been launched. They are your e-student visa and e-student X visa. E-student visa has been launched for the students who will be foreign students who will be studying in Indian universities, and this e-students X visa has been launched for the dependents of those students. Next, where was the Northeast Region States Meet 2025 chaired by Union Minister Rajiv Ranjan Singh, right? And it was held between when, right? Held in January. So what is the location where was this held? Question asked is this. So this was held in Guwahati, Assam. Next students, let's move to the homework part. Your first question is, tell me recently who became the first person to reach a $400 billion net worth mark? Second, tell me recently, in order to boost the agriculture in Uttar Pradesh, World Bank has approved how much amount? Third question, recently who was appointed as the new RBI governor? Fourth, tell me who has been appointed as the new MD and CEO of Trans Union Sibyl. Who is the new MD and CEO here? Fifth question, tell me who has been appointed as the executive director at Yes Bank. And sixth question, tell me recently who has received the UNESCO Heritage Award? UNESCO Heritage Award. So these are your 5 homework questions, students. Do attempt them and I want to see maximum participation from all the students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 2 और 3 फरवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उत्कर्ष ओडिशा की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे एक MOU जो कि इंडिया के स्टैटिस्टिकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का काम करेगा। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को डिक्लेयर किया पहली कंट्री इन अफ्रीका टू एलिमिनेट ऑन्कोरोसिस, राइट। देन RBI ombudsman इन्होंने रिजॉल्व की 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो इन्होंने रिसीव की FY24 में। देन RBI ने टाइटन के नॉर्म्स फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर द PSS एक्ट ऑफ 2007 एंड नई इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में सर्च कर गई बाई 39% टू ओवर 32 लाख करोड़ रुपीज़ इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ FY25। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपके लर्निंग में कोई
कमी ना आ सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, cousins, relatives, let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कर्ष ओडिशा की, जो कि है मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर ओडिशा। राइट, पीएम मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। 28 से 29 जनवरी के बीच में ये मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव हुआ था, एज वेल एज मेक इन ओडिशा एग्जीबिशन। ये दो चीज़ें इनॉग्रेट की गई इनके द्वारा। राइट, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है मेक इन ओडिशा, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात की जाएगी कि हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कर सके इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एमओयू साइन किए गए। अगर हम यहाँ देखेंगे इसके दौरान 145 एमओयूज़ यहाँ पे साइन किए गए, जैसे जेएसडब्ल्यू जिंदल के साथ, वेदांता के साथ, देन जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, पीटीसी, अडानी ग्रुप, इन सभी कंपनीज के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किए गए ताकि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जा सके इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट आ जाते हैं DIID, दैट इज डाटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन डिवीजन, दैन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों ने एमओयू साइन किया IIIT दिल्ली के साथ, जो कि है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डाटा इनोवेशन लैब, ताकि इंडिया का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। देखो, हम जानते हैं आज के टाइम पे डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट, आपके पास डाटा होगा तो आप डाटा को एनालाइज करके उससे मीनिंगफुल आउटपुट निकाल सकते हैं, बेटर रीजनिंग कर सकते हैं उसके थ्रू, एंड बेटर यूज केसेस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास एक बहुत रॉ डाटा देखने को मिलता है। राइट, एंड उस रॉ डाटा को खेलने के लिए राइट स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप डाटा की मदद से, डाटा को यूज़ करके, एआई से यूज़ करके, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, इससे यूज़ करके अपनी जो प्रोसेसिंग है, राइट, जो डाटा कलेक्शन है उसको एनहेंस करके एक बेटर मीनिंगफुल आउटपुट यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसीलिए इंडिया के स्टैटिस्टिकल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया नाइजर को एज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका जिन्होंने एलिमिनेट किया है ऑनकोरोसेरेसिस। इसी को हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, एंड ये डिजीज पैरासाइट की बाइट से कॉज की जाती है। राइट, तो ये नाइजर पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है, राइट, जिसने अभी रिसेंटली एलिमिनेट किया ऑनकोसेरेसिस को। राइट, ये एक पहली अफ्रीकन कंट्री है, करेक्ट, एंड WHO के द्वारा इनको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। एंड ये डिजीज किसके थ्रू होती है? थ्रू अ बाइट ऑफ पैरासाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ओम्बड्समैन। इन्होंने रिजॉल्व की 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो इन्होंने रिसीव की FY24 में। देखो, ओम्बड्समैन का काम क्या होता है कि मान लो कोई, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, पेंशन किसी के अकाउंट में नहीं आ रही, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं लेकिन फिर भी पेंशन अकाउंट में नहीं आ रही है। राइट, तो वो क्या करेगा, कस्टमर यहाँ पर RBI को कंप्लेंट लिखेगा, वो कंप्लेंट RBI ओम्बड्समैन के पास जाएगी, एंड ओम्बड्समैन उनके डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, उनकी प्रॉब्लम को देखेगा, क्या कंप्लेंट है उसको देखकर यहाँ पे फिर मीनिंगफुल आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। राइट, तो उन कंप्लेंट का रेजोल्यूशन यहाँ पे RBI ओम्बड्समैन करता है, एंड यही बता रहा है कि RBI ओम्बड्समैन ने 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो रिसीव करी FY24 में, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिसीव करी, उनका 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है
आरबीआई इन्होंने टाइटन किया नॉर्म्स फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर द पीएसएस एक्ट ऑफ 2007। पीएसएस क्या है? पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क लाया गया है, नया फ्रेमवर्क। इसके अंदर जो बैंक्स अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उन पे पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है। पेनल्टीज की बात करें, आरबीआई ने एम्पावर किया अंडर द सेक्शन 30 ऑफ द पीएसएस एक्ट कि ये पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज और ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कंट्रावेंशन या फिर डिफॉल्ट। सेक्शन 31 कहता है दैट इट हैज़ एम्पावर्ड एन ऑफिसर ऑफ आरबीआई कि ये ऑथराइज कर सके टू कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशंस एक्सक्लूडिंग दोज ऑफेंसेज दैट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और विद इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। इसी के अलावा 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहले ये 5 लाख रुपए तक का था। एज वेल एज अगर जो डिफॉल्ट है वो रिपीट हो रहा है करेक्ट, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद 25,000 रुपये हर दिन की यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की जाती है आफ्टर द फर्स्ट इंस्टेंस, कि ये अगर इंपोज की जा रही है तो 25,000 रुपये दिन का यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की जाएगी उन पर। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंस सर्ज बाय 39% टू ओवर 32 लाख करोड़ रुपीस। राइट, मतलब जो नई इन्वेस्टमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है इंडिया में, उसमें हमें बढ़ावत होती हुई देखने को मिली है इन द फर्स्ट 9 months ऑफ FY25 एंड ये 32 से 37 लाख करोड़ रुपए तक यहाँ पे पहुंच गई है इन द फर्स्ट 9 months ऑफ FY25। इवन अगर हम देखें पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY23 एंड FY24, तो उसमें हमें 37 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखी है इंडिया में। एंड बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है राइट, उसमें हमें मैक्सिमम अनाउंसमेंट देखने को मिली। 1493 प्रोजेक्ट्स है राइट, जिनकी लागत ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की लागत रहेगी। उसमें हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनाउंसमेंट देखने को मिली। ये जो डाटा रिलीज किया गया है कि हमें इतना सर्च देखने को मिला है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ERD डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, उनकी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की गई, उसमें डाटा को रिलीज किया गया है। देन SBI की बात करें तो चेयरमैन कौन है? CS सेठी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है KMAMC जो कि है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने इंडिया का पहला MSCI इंडिया ETF को लॉन्च किया है। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड ये जो पहला ETF है जो कि ट्रैक करेगा मॉर्गन स्टैनली, ये वो पहला ETF है जो कि ट्रैक करेगा मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स इंडिया इंडेक्स को। राइट, एक चीज़। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया है जिसका नाम रहेगा SBI पैट्रॉन्स। राइट, ये सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ऊपर की एज के हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया, एंड 0.1% यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, NPCI ने इंप्लीमेंट किया नया रूल्स फॉर UPI ट्रांजैक्शन ID फ्रॉम 1 Feb 2025, जिसके अंदर हम देखेंगे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे @, हैश, स्टार, परसेंटेज, ये डिक्लाइन हो जाएंगे, इनको यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा आपकी UPI ID में। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं, तो गरुड़ एरोस्पेस इन्होंने प्लेज किया 100 करोड़ रुपीज़ टू डेवलप इंडिया का पहला ड्रोन सिटी, जो कहाँ पर होगी? इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली ड्रोन सिटी कौन सी होने वाली है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। राइट, कौन बनाएगा? गरुड़ एरोस्पेस बनाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे रहेगी। गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ये एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है राइट, जो ड्रोन्स बनाती है। एंड ये यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करके यूज़ केसेस निकाल कर कि कैसे हम उस ड्रोन सिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं राइट, जिससे नमो ड्रोन इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिल सके, दैट इज कि रूरल वीमेंस को हम ड्रोन की टेक्नोलॉजी सिखा सके एंड वो उससे अपना रोजगार अर्न कर सके। करेक्ट, सो गरुड़ एरोस्पेस यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग प्लेयर रहेगा, 100 करोड़ की लागत आएगी राइट, और पहली ड्रोन सिटी कहाँ पर होगी? इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिडबी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया त्रिचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं राइट, उनको सपोर्ट मिल सके, उनको ग्रो किया जा सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके। एंड ऑलमोस्ट 450 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे बिजनेस मिलेगा, मतलब हम कह सकते हैं 450 ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जहाँ पे जिनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा एट एन इंटरेस्ट 1% लोअर देन दैट ऑफ मार्केट रेट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। बीसीसीआई अवार्ड्स, इन्हीं को हम नमन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये अभी प्रेजेंट किए गए थे। एंड जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना ये बेस्ट आईसीसी प्लेयर्स ऑफ 2023-24 बने इन मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी रिस्पेक्टिवली, राइट। इनके अलावा दो और अवार्ड्स रहेंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी, राइट, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। ये 31st रेसिपिएंट बने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के फ्रॉम बीसीसीआई। जय शाह के द्वारा इनको ये अवार्ड से प्रेजेंट किया गया। देन इन्हीं के अलावा रविचंद्र अश्विन, इनको स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय बीसीसीआई। तो अगर नटशेल में देखें तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन मेंस कैटेगरी जसप्रीत बुमराह, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन वीमेंस कैटेगरी स्मृति मंदाना एंड बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड से रविचंद्र अश्विन को यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसीसी ने अपॉइंट किया राजेश निर्वन, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, राइट। डायरेक्टली याद रखेंगे, इस पिक्चर में आप इनको देख सकते हैं, ये है राजेश निर्वन जी। ये किनको सक्सीड करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। अभी इसरो के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये पायलट करेंगे नासा के एक्सियोम 4 मिशन को, एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ट्रैवल करेंगे, राइट। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये 17 जून 2006 को इंडियन एयरफोर्स में ऐड किए गए थे, एंड इनको 2000 से भी ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने सुकोई 30 मार्क 1, मिग 21, मिग 29, जैगवार, हॉक, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ये सारे प्लेन फ्लाई करे हुए हैं। अगर नासा की बात करूं, नासा के एक्सियोम 4 मिशन की, ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा क्रू को, राइट, एंड ये 4th मिशन रहेगा इसका। नासा ने 2023 में इस मिशन को लॉन्च किया था, एंड 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, यूएसए से। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। अभी नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है एक फंगस की, जो कि है फाइटोपैथोजेनिक फंगस, जिसका नाम रखा गया है एपिकोकम इंडिकम। ये स्पीशीज डिस्कवर की गई है बाय द रिसर्चर्स एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन यूपी। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, हमारी कोस्ट को जो फोर्स प्रोटेक्ट करती है, राइट, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशन सेफ्टी में, इसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार हमने 49th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया है इंडियन कोस्ट गार्ड डे का। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, 1 से 7 फरवरी तक ये ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करने के लिए, हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, एंड सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे एंड नॉन वायलेंस को हम प्रमोट करें, राइट। तो 1 से 7 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। इसकी एक थीम याद रखेंगे, लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ द नेबर, लव ऑफ द गुड एंड लव ऑफ द नेबर, इनमें से ये दोनों याद रखेंगे, राइट। ये प्रमोट करते हैं बेसिकली पीस एंड नॉन वायलेंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर स्टेट न्यूज़। इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी ये गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। कहाँ पर है ये? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, गुजरात में, करेक्ट। इंडिया की पहली इनलैंड मैंग्रोव, इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम बोले गुजरात स्टेट की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी रहेगी? इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी, राइट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं हम कुछ रिवीजन पार्ट पर। ये तो हमारा आज का सेशन, रिवीजन करने से कई चीज़ें आपको रिवाइज हो जाती है, तो लेट्स मूव टू दैट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशिया बॉक्सिंग बॉडी, जो कि अभी एशिया के इंक्लूजन के बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग में यहाँ पे बनाई गई है। तो किनको अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर? तो अजय सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग की है टू एक मिशन लॉन्च करने के लिए, जो कि एक ऑल वीमेन साइंटिफिक लूनर मिशन रहेगा। सितंबर 2026 तक इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगी, राइट। आपकी 6ठी से 9वीं क्लास तक की गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम 108 कंट्रीज। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है स्पेस किट। नेक्स्ट, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग इन दिसंबर 2024। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड पे आ जाता है नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन आइसलैंड रिस्पेक्टिवली। फिर वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की रैंक है 23rd अमंग 143 कंट्रीज। तो नहीं, इन दिस नेचर एजिंग इंडेक्स जो इंडिया की रैंक है वो है 123rd। अब यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एंशियंट लव सॉन्ग को अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है? उस सॉन्ग का नाम है सेव द लिंका, राइट। इंटेंजिबल मीन जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो कोई प्रोसेस है, जैसे सॉन्ग हो गया। टेंजिबल हो जाता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी आरबीआई ने रिलीज करी हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो अलाउ करती है जॉइंट असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एज पर द रिपोर्ट, जो लिक्विड कवरेज रेशियो है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट हैज बीन डिक्लाइन फ्रॉम 135.7% टू 128.5% इन सितंबर 2024। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन द आरबीआई's न्यू गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 फॉर मैंडेटरी क्लोजर? तो कौन सी यहाँ पे लिस्ट की गई हैं? डॉर्मेंट अकाउंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, ABC। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इन मॉरिशस सक्सीडिंग सलमान अल फरीसी, जो कि इंडोनेशिया के हैं? तो किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल? कौन रहेंगे वो हैं आपके संजीव रंजन, राइट। ये इस पोजीशन पे 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली रिलीज करी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स? तो सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी के द्वारा ये रिलीज की गई एंड पेंगुइन प्ले के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिक्लेयर करा गया है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, या मुझे होमवर्क में बताओ, 2 से 3 दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट सिलीजियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ? अंडर दिस फेबसी आईआईटी हैदराबाद इनिशिएटेड टू डेवलप लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपोनेंट्स एंड जीएनएसएस आरएफ फ्रंट एंड एएसआईसी। तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑलिव? ऑलिव क्या है? ये बेसिकली एक फिनटेक है, राइट, जो कि आपके लोन्स प्रोवाइड कराता है, राइट। तो किनके यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? यहाँ पे वो हैं सौरव गांगुली, यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की जो रिगार्डिंग डिसीजन आया रिगार्डिंग द स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ FY25। यहाँ पर हम देखें तो PPF का रेट 7.1% है, अनचेंज रखा गया, बिल्कुल सही। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.4% रहेगा, नहीं, ये है 8.2% का। तो ऑप्शन बी गलत था यहाँ पे, अब ये भी सही है। सी है सीनियर सिटीजन सेविंग रेट जो है वो है 8.2 का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही थे, बी गलत था, वो हमने सही कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025 से 2027 तक आई है। इस स्कीम के अंडर जो आपके जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बढ़ावा हमें देखने को मिले। यहाँ पे कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिसेंटली फाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड रिवाइज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 यहाँ पे कर दिया गया है एंड एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो पूछा जा रहा है कि कौन है वो एक्सपर्ट पैनल के हेड? तो ये 19 मेंबर की कमेटी रहेगी। यहाँ पे जो इनको लीड करेंगे इस पैनल को वो है रामेश चंद जी एंड इनके अलावा 18 और मेंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, which countries have recently became full members of the European Union led Schengen free travel zone? तो यूरोपियन यूनियन में एंड उनको शेनेगन फ्री ट्रेवल जोन का पार्ट बनाया गया, वो है रोमेनिया एंड बुल्गारिया। नेक्स्ट, अभी एनपीसीआई ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैप फॉर यूपीआई प्रोवाइडर्स फॉर ऑल। देखो यहाँ पे एनपीसीआई क्या कह रहा है कि अगर 100% मार्केट कैप है ना यूपीआई ट्रांजैक्शन का, यूपीआई यूजर्स का, तो उसमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 30% यहाँ पे ले सकती है मैक्स टू मैक्स, राइट। ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन अब इस डिसीजन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको पूछा गया कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2 साल तक, ये हो गया आपका 31 जनवरी 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखो इससे
होगा क्या, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फ़ोन पे एक लीडर है, राइट, गूगल पे एक आपका लीडर है। फ़ोन पे होल्ड करता है 47.8% ऑफ द मार्केट शेयर, एंड यहाँ पे सर एनपीसीआई कह रही है कि 30% तक ही हमें लिमिट करना है, राइट। गूगल पे की बात करें 37.02% ये यहाँ पे मार्केट शेयर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा डेंट होता हुआ हमें दिखेगा, इसीलिए ही यहाँ पे ये मार्केट शेयर को इंक्रीज और जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपॉइंट किया भवनेश कुमार को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025। तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, क्या नाम रहेगा इनका, ये है भवनेश कुमार। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे भवनेश कुमार, ये रिप्लेस करेंगे अमित अग्रवाल को, ठीक है। नेक्स्ट, किनको हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन। इंडियन रीट्स एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन, वो हैं आलोक अग्रवाल। टेक अ नोट ऑफ दिस, आलोक अग्रवाल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप्स हैव सक्सेसफुली कोलैबोरेटेड टू स्टडी यूजिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स टू एड्रेस ऑर्बिटल डेब्रीज रिमूवल। तो वो है जापान एंड इंडिया, राइट। जो स्पेस में हमारे अर्थ के चारों तरफ, राइट, जो स्पेस डिब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए एक लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट को बनाया जाएगा, राइट, जिस पे कौन काम कर रहा है, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस फ्लैट्स, जो कि है 1675 फ्लैट्स। आपके झुग्गी झोपड़ी जिनकी हटा दी गई थी उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसी के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, इन्होंने वीर सावरकर कॉलेज का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अभी पीएम मोदी विजिट पे थे न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ये किया गया। यहीं पे मेट्रो के फेजेस को भी दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ई ऑक्शन पोर्टल का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी लॉन्च किया गया, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ई ऑक्शन किया जा सके जो कि बैंक के पास गिरवी रखी हुई हैं। तो उस पोर्टल का नाम है बैंकनेट, एंड इस ऑक्शन पोर्टल है तो मतलब यहाँ पे बोली लगेगी उन प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट, अभी डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, ये एक प्रोफाउंड डैश है जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं एंड इन्होंने इंडिया के जो पोखरान टेस्ट हुए थे, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट अग्निस कैलिटी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 103। पूछा जा रहा है विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, ये हंगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ टू डेवलप युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो ये म्यूजियम इंडिया एंड फ्रांस मिलके बना रहा है, करेक्ट। कहाँ पे बना रहा है ये इंडिया में न्यू दिल्ली में ही बनेगा ये म्यूजियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ ONDC लेड बाय DPIIT, जिससे जो इंडिया का डिजिटल कॉमर्स है उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है, ए और बी गलत है। ए कह रहा है कि ONDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, बिल्कुल सही, राइट। एंड दिसंबर 31 2021 को इसको बनाया गया था, तो बिल्कुल सही। एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, नहीं 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन ए अब सही है। बी कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जैसे नाबार्ड, HDFC बैंक, BSE, सिडबी, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक इनके पार्ट रहेंगे, तो बिल्कुल सही, सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। अब आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 3rd फेज ऑफ डैश। तो मालदीव में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसका जो 3rd फेज है उसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू मर्ज विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025। तो ये रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, उस नए मार्स ड्रोन का नाम बताओ जो कि इंजूनिटी हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन रहेगा, सक्सेसर रहेगा, ताकि जो मार्स प्लैनेट है उसको हम और बेटर एक्सप्लोर कर सके। तो नाम रहेगा मार्स चॉपर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली बिल्ड करी 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो कि है अमूल्य 1272 एंड अक्षय 1273, एंड इनको लॉन्च किया गया बाय वंदना अग्रवाल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये कौन बना रही हैं, ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये बनाई जा रही हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली अप्रूव किया
raising of the long-term bonds worth 10,000 crore rupees in a single or multiple tranches during FY25 ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस किया जा सके, तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फॉर 5 more years टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ इंडिया, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर HD कुमार स्वामी, इनके द्वारा सेकेंड राउंड लॉन्च किया गया है PLI स्कीम का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, जिसको बोला गया है PLI स्कीम 1.1। ये स्पेशलिटी स्टील के लिए लॉन्च किया गया है। 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे इसके अंडर। पूछा जा रहा है जो ये PLI स्कीम 1.1 आई है, ये कब से कब तक की आई है, तो ये FY26 से लेके FY2030 तक इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस नई स्पेशलाइज्ड वीज़ा कैटेगरी का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी लॉन्च की गई, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है जो कि अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो 2 वीज़ा लॉन्च किए गए हैं, एक है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड एक है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ई स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड ई स्टूडेंट्स एक्स वीज़ा लॉन्च किया गया है इन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्ट्रीट्स मीट 2025 की हुई, जहाँ पे राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया था। जनवरी में हुई थी, ये हुई आपकी गुवाहाटी असम में। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इन्होंने एक साइन किया है MOU विद IRDAI टू फॉस्टर कॉपरेशन इन द एरियाज क्रिटिकल टू व्हाट, इट इज़ फॉर द क्रिटिकल्स टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या कौन सी कंट्री 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के, तो वो है इंडोनेशिया, यहाँ पे 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क पार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी recently who became the first person to reach a $400 billion net worth mark. Second, tell me recently, in order to boost the agriculture in Uttar Pradesh, World Bank has approved how much amount? Third question, recently who was appointed as the new RBI governor? Fourth, tell me who has been appointed as the new MD and CEO of Trans Union Civil. Who is the new MD and CEO here? Fifth question, tell me who has been appointed as the executive director at Yes Bank. And sixth question, tell me recently who has received the UNESCO Heritage Award? UNESCO Heritage Award. So these are your 5 homework questions, students. Do attempt them and I want to see maximum participation from all the students.